नमस्कार दोस्तों, JNKB इंग्लिश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अंग्रेजी के लेटर बी से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है बैकड्रॉप। इसका हिंदी अर्थ होता है पृष्ठभूमि। का प्रोनाउंसिएशन बैकड्रॉप, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग लाई बिहाइंड और बियॉन्ड, सर्व एज ए बैकग्राउंड टू। इसके सिनोनिम्स हैं बैकग्राउंड, ग्राउंड। इसके एंटोनिम से फोरग्राउंड, सेंटर, फोकल पॉइंट, फोकस, हार्ट। यूसेज इन ए सेंटेंस: द नॉवल अनफोल्ड्स अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ वॉर। सेकेंड, द माउंटेन्स प्रोवाइडेड अ परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर द वेडिंग फोटोज। आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज बैन। इसका हिंदी अर्थ होता है लानत या शाप। प्रोनाउंसिएशन बैन, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग a cause of great distress or annoyance. Synonyms: curse, evil, plague, calamity. इसके एंटोनिम से benefit, blessing, boon. Usage in a sentence: the poor train service has been the bane of commuters for years. Second, the ugly school uniforms were the bane of a student's life. नेक्स्ट वर्ड या फ्रेज है बैंक ऑन। इसका हिंदी अर्थ होता है आशा करना। प्रोनाउंसिएशन बैंक ऑन, पार्ट ऑफ स्पीच, फ्रेजल वर्ब। मीनिंग रिलाई ऑन कॉन्फिडेंटली, बेस वंस होप्स और कॉन्फिडेंस ऑन समथिंग। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रस्ट, काउंट ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन। इसके एंटोनिम्स हैं डाउट या सस्पेक्ट। यूसेज इन ए सेंटेंस: you can bank on him for your support. Second, can I bank on your support? Next word is bankruptcy. इसका हिंदी अर्थ होता है दिवालियापन। का प्रोनाउंसिएशन bankruptcy, part of speech, noun, meaning the state of being bankrupt in which people or other entities cannot repay their debts. Synonyms: insolvency, failure, collapse. इसके एंटोनिम से वेल्थ, रिचनेस, अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट। यूसेज इन ए सेंटेंस: बैंक्रप्सी इज ए कॉमन फिनोमेना इन एन इकोनॉमिक रिसेशन. सेकेंड, बैंक्रप्सी ऑफ दैट कंपनी हैज रिजल्टेड इन मैनी जॉब कट्स. नेक्स्ट वर्ड इज बार्ब. इसका हिंदी अर्थ है कांटिया या कांटा. प्रोनाउंसिएशन बार्ब, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग पहला अ क्लस्टर ऑफ स्पाइक्स ऑन बार्ब्ड वायर. दूसरा अ डेलिबरेटली हर्टफुल रिमार्क. इसके सिनोनिम्स हैं स्पाइक, स्पाइन, प्रिकल, थॉर्न. इसके एंटोनिम्स हैं कॉम्प्लीमेंट, प्रेस, ट्रिब्यूट. यूसेज इन ए सेंटेंस: अ फिश हुक हैज ए बार्ब टू प्रिवेंट द फिश फ्रॉम escaping आफ्टर बीइंग हुक्ड. सेकेंड, द कैंडिडेट्स एक्सचेंज बार्ब ड्यूरिंग द डिबेट. आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज बार्ड. इसका हिंदी अर्थ है वर्जित या बाधित. प्रोनाउंसिएशन बार्ड, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग प्रिवेंटिंग एंट्री और एग्जिट और ए कोर्स ऑफ एक्शन. इसके सिनोनिम्स हैं रिस्ट्रेंट, बैंट, फॉरबिडन. इसके एंटोनिम्स है परमिसिबल, एक्सेप्टेबल, लेजिटिमेट. यूसेज इन ए सेंटेंस: when he cheated the producer of the company, he was barred from working in that company. Second, boulders barred her passage to her home. Next word is beget. Pronunciation beget, part of speech, verb, meaning especially of a man bring a child into existence by the process of reproduction. Synonyms: engender, generate, produce. Antonyms: abolish, destroy, demolish. Usage in a sentence: they hoped that the king might beget an heir by his new queen. Second, success begets further success. अगला शब्द है बेहीमोथ. इसका हिंदी अर्थ होता है विशालकाय.
Pronunciation: behemoth, part of speech, noun, meaning पहला, something enormous, especially a large and powerful organization. दूसरा, a huge or monstrous creature. इसके सिनोनिम्स है giant, monster, colossus. इसके एंटोनिम्स है dwarf, small, tiny. Usage in a sentence: shoppers are now more loyal to their local shops than to faceless behemoth. Second, the city is a sprawling behemoth with no heart. आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर. नेक्स्ट वर्ड इज बिहेस्ट. इसका हिंदी अर्थ होता है आज्ञा या आदेश. प्रोनाउंसिएशन: बिहेस्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग अ पर्सन्स ऑर्डर और कमांड. इसके सिनोनिम्स है कमांड, ऑर्डर, मैंडेट, बिडिंग. इसके एंटोनिम्स है पर्सनल चॉइस, आंसर. यूसेज इन ए सेंटेंस: द बजट प्रपोजल वॉज अडॉप्टेड एट द प्रेसिडेंट्स बिहेस्ट. सेकेंड, they had assembled at the ground at his behest. आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर. नेक्स्ट वर्ड इज behoove. इसका हिंदी अर्थ होता है योग्य होना या उपयुक्त होना. प्रोनाउंसिएशन: behoove, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब, मीनिंग appropriate or suitable. It is a duty or responsibility for someone to do something it is incumbent upon. Synonyms: befit, be suitable for, be proper for something or some work. इसके एंटोनिम्स है unfit, contrary, differ. Usage in a sentence: in the interest of establishing a good relationship with my neighbors, it would behoove me to go over to their houses and introduce myself. Second, it behooves any coach to study his predecessors. नेक्स्ट वर्ड इज बिलेटेंट. इसका हिंदी अर्थ है विलंबित या देर में आया हुआ. प्रोनाउंसिएशन: बिलेटेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग कमिंग और हैपनिंग लेटर देन शुड हैव बीन द केस. इसके सिनोनिम्स है लेट, ओवरड्यू, टार्डी, डिलेड. इसके एंटोनिम्स है पंक्चुअल, अर्ली, टाइमली, प्रॉम्प्ट. यूसेज इन सेंटेंस: द अवार्ड इज बीइंग मेड in belated recognition of her services to the industry. Second, a very belated happy new year to you all. Next word is beleaguer. इसका हिंदी अर्थ होता है अवरोध करना. प्रोनाउंसिएशन: beleaguer, part of speech, verb, meaning put in a very difficult situation, cause problems or difficulties. इसके सिनोनिम्स हैं besiege, harass, pester. इसके एंटोनिम्स हैं कंफर्ट, बेनिफिट, रिलैक्स. यूसेज इन सेंटेंस: द beleaguered प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग अंडर येट मोर प्रेशर. सेकेंड, ही अटेम्प्ट्स टू आंसर सेवरल क्वेश्चंस दैट beleaguer द इंडस्ट्री. नेक्स्ट वर्ड इज bemused. इसका हिंदी अर्थ होता है हतप्रभ या विचार शक्ति हर लिया हुआ. प्रोनाउंसिएशन: bemused, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव एंड वर्ब, मीनिंग as an adjective, puzzled, confused or bewildered. Meaning as a verb, puzzle, confuse or bewilder someone. Pronunciation: distracted, bewildered, baffled. Antonyms हैं bored, alert, conscious, disinterested, unoccupied. Usage in a sentence: he seemed bemused as he recounted the extraordinary tale. Second, he was bemused by what was happening. Next word is benchmark. इसका हिंदी अर्थ होता है मानदंड. Pronunciation: benchmark, part of speech, noun and verb, meaning as a noun, a standard or point of reference against which things may be compared. Meaning as a verb, evaluate something by comparison with a standard. इसके सिनोनिम्स है स्टैंडर्ड, यार्डस्टिक, बेसलाइन. इसके एंटोनिम्स है ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट, गेस. यूसेज इन ए सेंटेंस: हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस set a new benchmark for singers across the world. Second, we are benchmarking our performance against the
against external criteria. नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशियरी. इसका हिंदी अर्थ होता है लाभार्थी या हितग्राही. प्रोनाउंसिएशन बेनिफिशियरी. पार्ट ऑफ स्पीच नाउन मीनिंग अ पर्सन हु डिराइव्स एडवांटेज फ्रॉम समथिंग, स्पेशली अ ट्रस्ट, विल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. इसके सिनोनिम्स हैं हेयर, हेरिस, इनहेरिटर, लिगेटी. इसके एंटोनिम्स हैं गिवर, पेयर. यूसेज इन ए सेंटेंस: as the billionaire's only beneficiary, Cheryl will receive the entire estate. Second, a cottage may be, a college may be the beneficiary of a private donation. A college may be the beneficiary of a private donation. आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर. नेक्स्ट वर्ड इज बिसेट. इसका हिंदी अर्थ होता है व्याकुल करना, सताना या घेर लेना. प्रोनाउंसिएशन बिसेट. पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब मीनिंग पहला टू ट्रबल समवन और समथिंग परसिस्टेंटली. दूसरा बी कवर्ड और स्टडीड विथ. सिनोनिम्स सराउंड, एनकम्पास, इन्वेड. इसके एंटोनिम्स हैं डिफेंड, प्रोवाइड. यूसेज इन ए सेंटेंस: द एनिमी beset the town with a strong army. Second, our troops was beset by enemy fire. नेक्स्ट वर्ड इज बिस्टो. इसका हिंदी अर्थ होता है प्रदान करना या अर्पित करना. प्रोनाउंसिएशन बिस्टो. पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब मीनिंग पहला कन्फर और प्रेजेंट एन ऑनर, राइट और गिफ्ट. दूसरा पुट समथिंग इन ए स्पेसिफाइड प्लेस. इसके सिनोनिम्स हैं गिव, ग्रांट, प्रेजेंट, कन्फर. इसके एंटोनिम्स हैं डिप्राइव, टेक रेफ्यूजी. यूसेज इन ए सेंटेंस: द ऑफिस वॉज bestowed on him by the chief of state. Second, the king praised her for working with the poor and he would later bestow the medal of honor. आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर. नेक्स्ट वर्ड इज बिकर. इसका हिंदी अर्थ है झगड़ा या कलह. प्रोनाउंसिएशन बिकर. पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब मीनिंग आर्ग्यूइंग अबाउट petty and trivial matters. इसके सिनोनिम्स हैं स्क्वेबल, डिस्प्यूट. इसके एंटोनिम्स हैं एग्रीमेंट, कंसेंसस. यूसेज इन ए सेंटेंस: even adults are prone to bicker about petty things. Second, whenever the phone rings, they bicker over who must answer it. Next word is bigotry. हिंदी अर्थ कट्टरता. प्रोनाउंसिएशन bigotry. Part of speech noun meaning obstinate or unreasonable attachment to a belief, opinion or faction, in particular prejudice against a person or people. इसके सिनोनिम्स है intolerance, prejudice, fanaticism, discrimination. इसके एंटोनिम्स हैं tolerance, fairness, forbearance, impartiality. Usage in a sentence: he once called liberalism a form of bigotry. Second, critics say the mayor is a bigot who is inflaming racial tensions in his city. Next word is blasphemy. हिंदी अर्थ ईश निंदा या ईश्वर निंदा. प्रोनाउंसिएशन blasphemy. Part of speech noun meaning the action or offense of speaking sacrilegiously about God or sacred thing. Profane talk. इसके सिनोनिम्स है sacrilege, profanity. इसके एंटोनिम्स है safeguard, protect, aid. Usage in a sentence: he was found guilty of blasphemy and sentenced to 3 years in jail. Second, he was detained on charges of blasphemy. Next word is blatant. हिंदी अर्थ प्रबल या शोर मचाने वाला. Pronunciation blatant. Part of speech adjective meaning bad behavior done openly and unshamedly, offensive. इसके synonyms हैं flagrant, shameless, conspicuous. इसके antonyms हैं subtle, quiet, unnoticeable, audacious. Usage in a sentence: the whole episode was a blatant attempt to gain publicity. Second, he showed a blatant disregard
for the safety of other drivers. Next word is bolster. Hindi अर्थ सहारा. Pronunciation bolster. Part of speech verb meaning support or strengthen. इसके synonyms हैं reinforce, brace, fortify. इसके antonyms हैं obstruct, weaken, hinder. Usage in sentence: he is making a strong effort to bolster the territory's confidence. Second, she is thinking of ways to bolster her career. नेक्स्ट वर्ड इज bonhomie. हिंदी अर्थ खुशमिजाजी या अच्छा स्वभाव. प्रोनाउंसिएशन bonhomie. पार्ट ऑफ स्पीच नाउन मीनिंग cheerful friendliness. geniality. Synonyms: affability, amiability, sociability. Antonyms: aloofness, coldness, ferocity. Usage in a sentence: there was a casual bonhomie between the actors at the rehearsals. Second, he executed good humor and bonhomie. Next word is bottleneck या गतिरोध. Part of speech noun. Pronunciation bottleneck meaning a situation that causes delay in a process or system. इसके synonyms हैं obstruction या hindrance. इसके antonyms हैं directions, allowance. Usage in a sentence: they pointed out that the bottleneck is caused by the development time. Second, bridge construction has created a bottleneck on some part of Main Street. Next word is brainchild. हिंदी अर्थ आविष्कार या मौलिक विचार. Part of speech brainchild. Pronunciation noun meaning an idea or invention which is considered to be a particular person's creation. इसके synonyms हैं inspiration, creation, brainstorm. इसके antonyms हैं not a good idea. Usage in a sentence: the project was the brainchild of one of the students. Second, the statue is the brainchild of a local landscape artist. Thank you.